Bonjour. 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 Oui. On va commencer avec le nouveau sujet, l'accent. L'accent means accents, right? And accents are in Lemon language, you can understand matra. So in French, we have accents. So we have five accents. And quickly let me know if the voice is still that robotic or better. No, it's still the same. Yeah, it's still breaking. Okay. Okay, Wi-Fi is all working fine. Not sure what's the issue. The whiteboard is visible on screen. We Oui. Wait. If I'm going to write day of say, I will always say date. Jabbi dates are always masculine. So I will start by le, L-E, le. Set. Set is the number 7. Le, set, May. So we can also start by writing dates of say. Le, set, May, 25. And quel est le jour aujourd'hui? Jour, if I ask Ayushi, quel jour nous sommes? day. Quel jour nous sommes? Oui, Jour is day, right? oui. Today. Quel jour nous sommes? क्या day क्या है वैसे? ध्रुव, मुझे quel नहीं jour nous sommes? It's Wednesday. Mercury. Mercredi. Mercury. Très bien. L'accent, B, accents. So we will be discussing 5 accents, starting from number 1, l'accent aigu. L'accent aigu. A-I-G-U. Répétez s'il vous plaît. À l'accent aigu. L'accent est Accent. Aigu. Aigu, Aigu. 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 Très bien. The direction of accent aigu is towards the right. The EQ पर ऐसे वाला towards right, like this. Okay. So this accent is called accent aigu. And the best part about this accent is ये सिर्फ EQ पर आता है. So you don't have to get confused कि ये कब आएगा, कब नहीं आएगा. Just keep in mind only comes on E. Obviously we have to learn कब आएगा. But we don't have to get confused कि किस letter पे आएगा at least. Only appears We on the vowel E. We second point, pronunciation. If I talk about its sound, so it sounds. 1 minute. I think इसकी battery low हो रही है इसलिए तो नहीं हो रहा. Sometimes the computer gives issues because नया of लेना the पड़ेगा। battery also. Let's see अगर better होगा आपकी नहीं.
All right. नहीं आपकी वॉइस तो ठीक हो Sounds. गई है. ठीक हो गई है. It was just because of the battery. Yes. Great. नहीं वो तभी पहले मैं ही हो सोच गई रही थी थी. नेट. Okay. No idea. I thought कि नेट तो ठीक चल रहा है. What the issue was? But अभी बैटरी का उसने दिखाया. ठीक है. So sounds like A. हम अभी साउंड की बात कर रहे हैं. अगर ई के ऊपर ये एक्सेंट एग्यू आप हमें दिख गया है, सो वी हैव टू मेक इट साउंड लाइक ए. सो आई एम राइटिंग साउंड इन इंग्लिश. आई वुड आल्सो रिकमेंड यू टू राइट डाउन द हिंदी. 1 minute. यार हटा ही देते हैं. दिस वाज द एक्सेंट. एंड हिंदी में जैसे हम ए लिखते हैं ना, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस आल्सो. ए साउंड्स लाइक ए. वी विल बी राइटिंग सम एग्जांपल्स. जैसे फॉर एग्जांपल etudiants. We can also say école. Okay. So whenever जैसे word है PARLE, right now there is no accent on. अभी last look at this, just the last example. There is no accent on E. So we will call this word as parle. कोई A का sound नहीं है. Parle, parle. But the moment I add an accent, so this word becomes now parler. Parler. Yes. So जो भी word E से end हो रहे हैं, we don't have that A sound unless the accent is there. Wait, now the word, this is, you can call it E coal, whatever, but this E has an accent, ague. And what does it mean? Ecole. Ecole means school. Ecole, school. The word, you can call it étudiant, wrong, right? But the moment I'm adding accent, the sound becomes clear. Étudiant. 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 Étudiant, ça signifie student. Oui. École, school. Parler. Cool. Parler with an accent is a past form of speak. It's like spoke. तो So इसलिए right now this means spoke. Yep. इसलिए मैं बोलती I focus on so much on the sound because the moment the sound changes, the meaning changes. Right? In the same way, जैसे this J and E together is called je. And a lot of times we say these as J. J and E is je. No A sound. जब भी वो A sound आता है, this is J. Je. Now, this has nothing to do with the accent. This is about, I'm talking about the sound. Je, I, J, I have. The meaning changes. Oui? So the moment you say je suis, so je suis sounds like I have, am. I know, as a teacher, I know तुम लोग को je suis बोलना है. But you guys end up saying I have suis. I have, am. So say, ce n'est pas correct. C'est incorrect. This is wrong. So इसलिए je suis and j'ai whatever. J'ai. Clear? Oui. So this is the sound of. So accents help us with the sound. ये फिर नहीं लगा. आखिर. Wait. Now second one. Second is accent, l'accent. Grave. L'accent grave. Now this particular accent is found on 3 vowels. One is E, one is A. O, and one is A.
Salmo, 3 vowels, and direction of this accent is towards left. One more silly way to learn this is if you have actually the name ague comes from acute. Do you remember we used to learn the angles? Acute Yes, angle. acute angle. हाँ, acute angle has this kind of, right? So इसीलिए the word comes from acute, ague. The direction is towards this, and the graph is more of like op. मैं खुद भूल गई हूँ. दूसरा कौन सा एंगल था? Like for graph. बता भाई साइंस। साइंस का क्या है? मैथ्स की सीन है. हाँ, तो तू बता ना। ऑप्स इस कुछ ऐसे ही था. I don't remember now. All right. ठीक है, दिस इज योर ग्राफ डायरेक्शन. लेट्स टॉक अबाउट नाउ साउंड की. अगर हम बात करें फॉर साउंड, इट ओनली चेंजेस द साउंड ऑफ ई. जब भी ओ के ऊपर और ए के ऊपर ग्राफ आएगा, देर इज नो चेंज इन द साउंड. द साउंड ओनली चेंजेस फॉर ई. So you can E. write this point. The sound only changes for E. And it sounds like air. Now, how we'll be writing air? Air, जैसे वो Yeah. not air, air. जैसे वो ए था, हिंदी में again I would be Eh, able to better write. जैसे वो ए, this with बोलते नहीं बड़े ऐसे करके air. बड़े की मात्रा ये तो. A, air. It seems like air is like Akshay Kumar was doing in Houseful, right? Let's just pretend that we didn't heard that. रिकॉर्डिंग हो गई है पूरी। Oh shit. Okay, let's write example of E first of all. Then we will talk about A and O also. For example, if Ayushi try to pronounce this word, अभी कोई accent नहीं है. What do you think the pronunciation should be? Pair. I think you know that is why. Also, but I'm giving one more. Let me see examples. ठीक है. Ritika, try to pronounce. ये हो जाएगा, ठीक है. आप this one. तो यहाँ पे अगर हम ई, Apre. हाँ, इसमें हम ई के साउंड देखेंगे तो देखो, अगर हम यहाँ पे एक्सो एग्यू लगा दे, एंड वी नो एग्यू का साउंड इज ए, सो हम बोलते हैं पेर, पेर, बट द साउंड इज ए, so which makes it पैर, पैर. So in the same way, आप रे, नॉट, हल्का सा फिर फर्क है, सुनो. आप रे, आप रे, तो ए नहीं है, आप रे, आप रे, आप रे. Apre. वे And one more doubt, like in pair, we only putting accent on the first E. फर्स्ट ए, Why not? यस. Why not on the second one? अगर सेकंड में भी लगा देंगे तो पैख रहे, Oh. सेकंड में भी लगाएंगे तो साउंड आ जाएगा ना, पैख रहे. दैट्स नॉट द साउंड, मतलब पैख So मींस how we साउंड. gonna differentiate like this sound is like suppose this air sound is gonna like air. So we put it on the first E, right? Suppose I will put on the end. वर्ड ही नहीं है अब ना। मात्रा कैसे होती है, धीरे धीरे हमें याद हो मात्रा कहीं जाती पे है. भी लगाते हैं। हाँ वही ना, ऐसे मात्रा हर जगह थोड़ा ना लग जाएगी. तो जैसे 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 यू विल बी Okay. लर्निंग न्यू वर्ड्स, यू विल बी लर्निंग, अच्छा इसमें इसकी स्पेलिंग ये है, इसकी, इट्स लाइक स्पेलिंग ना. तो जबरदस्ती तो Okay, वी विल नॉट got बी it. एडिंग एवरीवेयर. सो धीरे धीरे याद होते हैं, स्टार्टिंग में याद भी नहीं होते हैं, बट हमें अगर सिग्निफिकेंस पता हो ना, इट मेक्स इट इजियर टू लर्न. एटलीस्ट सिग्निफिकेंस एज इन हमें साउंड्स पता हो, वरना तो हम किसी भी ई पे, किसी पे एग्यू लगा दिया, किसी पे ग्राव लगा दिया. यू शुड नो द साउंड ए, एफ. एंड समटाइम्स अभी तो ये वर्ड्स हमने हमारे नोन है, बट जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड में दे रहे हो यहाँ पे, ओके, ट्राई टू प्रोनाउंस दिस रितिका वंस. Refere. ठीक है. नाउ इस वाले वर्ड में एक्चुअली दो, एक में एक्सो एग्यू है, दूसरे ई में एक्सो ग्राव है. सो वी नाउ वी नो
फर्स्ट ई का साउंड ए, सेकंड ई का साउंड ए. सो प्रेफेरे, प्रेफेरे. Prepare. एक्चुअली Prefer. प्रेफेरे नहीं होता है, वर्ड प्रेफेर होता है, प्रेफेर. सो वी विल ऐड, रिमूव द लास्ट, जस्ट अ मोमेंट. एक आर हटा देना बस. प्रेफेर, प्रेफेर मीन्स टू प्रेफर. सो je préfère, that's how we say. If I will be adding दोनों पे, for example, if I have added accent aigu, so then my sound would have been préférer, préfère, préfère, préfère. But in this case, we have 3 E's और तीनों का sound फर्क है. Last वाली E का no sound. There is no accent, no sound. But इस वाले का préfère, préfère. Oui? So this was the case of E. Now, why we are putting accents on O and A as well? So putting accents on, just a minute. Putting accents on O and A changes the meaning. Putting accent grave, we're talking about only grave, on O and A changes the meaning. For example, I will be writing एक तो O U. ठीक है. Wait, let me add accents now. O, O कहीं मैंने ऊपर O लिख दिया है. Guys, change that O from O to U. Made a mistake. It's not, accent grave is on 3 letters which are E, U, R, not O. Okay. This is O की जगह U है. ये Please, U है. इसको भी U please. O में नहीं है accent. Example दिख के याद है मुझे एकदम. A and this A. ठीक है. Now O, U, U, this and this O, U, U. Both have same sound. U, U. But U without accent means or. जैसे मुझे बोलना है Ritika or Ayushi, for example. So Ritika, U, Ayushi. Sometimes I even say yes or no. Oui ou no. Oui ou no. If I want to say easy or difficult. Facile ou difficile. So that's your U. But this U, we have done this कि हमने questions करे थे ना, where you come from. You must have seen Yes. this. This the means actually from. उसके आगे ये U लगा होता है. U, do, via, do. U with an accent, not without accent. Again, the You use sound क्या of The. D means from. So from Oh, where from. you come from. From where do you come from? So U means where. See, meaning changes. Sound remains same, but meaning changes. Now, you have done avoir verb. Yes. avoir verb के conjugations याद है? Je, tu, a, il आता है फिर उसके बाद. Il a, elle a. Ella. Can you see this a thing? He has, she has. So whenever you use the word a, this means has or have, right? So a. Now this also means a, but a avec an accent grave means to, in or at. जो हम use करते हैं j'habite à Paris, j'habite à Toronto, like you guys use in the sentence, j'habite à Toronto. Now if you will not write, for example, the accent, meaning change हो जाएगा ना. I live have Toronto. कुछ ऐसा मीनिंग आएगा जो ग्रामेटिकली कुछ मतलब नहीं बन रहा है सेंटेंस का. तो इसलिए एक्सेंट आर इम्पोर्टेंट. आई लिव एट टोरंटो. अब इसका मीनिंग एट हो गया. विदाउट एक्सेंट
It will give you the sense of are. Sorry, it will give you the sense of has. Any doubts? Oka, Dut, Ritika? Dhruv, Ayushi? All good. All good? So let's focus whenever you're learning a new word. See, again, I'm not saying कि इसको याद करने बैठो, but be very conscious while noticing कि अच्छा इसमें maybe बोल के कि this has accent grave, this has accent aigu, this has this accent, so that you remember. Let's continue with the third one. Now we have accent sidil. This was all about accent grave. Accent aigu, let's quickly revise. Accent aigu only used on letter E and gives the sound Yes. of A. A. Accent grave used on A, U, U, and E. E. A. E. A, E, U. And for E, the sound changes to A. A. For A and U, no change in sound, Remains just the same. change in meaning. Meaning. Okay, now we have trois accents. L'accent sidil. Sidil. Now this one is only used on letter C. और इसका सिंबल ऐसा होता है सी के नीचे एक तरह से उल्टा सी हम बनाते हैं ऐसा Like Gresson. गार्सों Garson. Garson. so what this thing helps अब we will थोड़ा सा लॉजिक इंग्लिश का ओके ठीक है नाउ सी प्लस ओ वॉवल से स्टार्ट करते हैं ए से स्टार्ट करते हैं सी प्लस ए if I want to make word by CA, let's say scat. Anything else? CA. Can you think of Car. anything? Car. Yeah, that's it. C plus O. Chur. Coat. ठीक है. CO. Anything you want to add? CO. College. Where? Anything. C plus now A. E. ठीक है. Scent. CE. Cell. Très bien. Merci. C plus AEI. ठीक है. C last is इसको ऊपर लिखते हैं यहाँ पे C plus U. Wait. Now you must notice that C when comes with A, O and U. The first three. What sound it gives? K or S? Cat, coat, cut, college, K. K. This is actually the logic in English and French both. This logic is same. And CE, the S sound. CI, S sound. तो अब जो हमारे पास words हैं, I want my sound, this particular accent changes the sound of C from K to S. So you can write, ये तीनों के साथ the sound is K. K. With this, the sound is S. Wait. So Sidil, what's the purpose of Sidil? This changes the sound of C from K to S. जैसे अब word example. We have been doing this word gar. अब this should be garcon. Normal, garcon. But when I add the accent below this, the word becomes garçon. It's not garcon, it's garçon. Garçon means boy. More words can be the français, even French, the word French, français. It should be franc according to the logic.
CA and the word leco, ऐसा. So people end up saying leco, français because they don't know the significance of this thing. इसके add होने से the sound changes to sir. So français, Français. leçon. Yes. Français is French, leçon is lesson. Oui? Oui. See, so this is again, अगर हम बात करें, इसका कोई particular sound है obviously. Whenever you see C के नीचे सिदिल है, the sound is sir. Oui? Garçon, français. बट मेरे को ये समझ नहीं, आपने एग्जांपल क्यों दिए हैं? समझने के लिए। समझने के लिए ये वाले C रेफरेंस A C O. हाँ, you should know ना कि जब भी C के आगे O आता है, it gives the क sound. So you should know कब आपने कब तो क sound होता है. इंग्लिश के लिए रेफरेंस दिया ना, आपने नहीं, फ्रेंच के same लिए for नहीं. French के लिए भी है. Same rule is for French. Yeah. तो हमने कहा तो बोला ही नहीं, कौन से उसमें बोला है कहा? तो हमने चेंज कर दिया ना एक्सेंट लगा के, यही तो पर्पस है एक्सेंट का. द मोमेंट वी एडेड एक्सेंट, द साउंड चेंज्ड. अब जैसे ये एक वर्ड है, फॉर एग्जांपल एक फ्रेंच में, ठीक है, यहाँ पे मैंने नहीं लगाया कोई कहीं पे भी सीधी, तो यहाँ पे क आएगा, कॉमन्स. यहाँ वाला जो सी था, क. दूसरे वाला जो सी है, स. कॉमन्स. यहाँ एक्सेंट नहीं है, और लगा देंगे तो समॉन्स हो जाएगा. अगर हम फर्स्ट नहीं, वाले, लास्ट वाले में. तो उसका तो पहले ही स साउंड है ना, क्यों हाँ. लगाएंगे? तो स को सा में क्यों चेंज करेंगे फिर हम? सिदिल का पर्पस क्या है? के टू स. लुक ध्रुव, सिदिल का पर्पस है जब भी सी का साउंड क है, वी चेंज इट टू स. तो इस वाले वर्ड में सी के दो साउंड है अलग अलग. तो यू शुड नो ना कि जब भी ओ के साथ आता है इट्स क, ई के साथ आता है इट्स स. तो दैट्स हाउ वी से कॉमन्स. ओके. बट इन केस आपने गलती से यहाँ लगा दिया, तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा समो, सोमोन्स. ओ है ना, सोमोन्स. That's how the sound changes. Instead of commons, it's sommons now. But sommons is not a word in French, so don't add. Commons means, जो English में meaning है, to start. Commons is an English word also. To start. Wait, wait. Now we are moving on to our next accent, l'accent circumflex. This is number 4. क्या तो? L'accent circumflex. L'accent circumflex it's like a hut accent, and it is used on all 5 vowels. It is used on all 5 vowels. We also call it hut accent because of its shape. So how exactly this A के ऊपर you are making this, E के ऊपर you are making this. Wait. Now let's understand why. So it doesn't change the sound. It's the best part about this accent कि इसमें कोई sound change नहीं है. इसकी सिर्फ एक history है. ये सिर्फ यही एक accent ऐसा है जो अपनी history की वजह से है. मुझे तो लगता है इस accent को हटा भी देना चाहिए. No purpose. तो in जैसे words like forest, ठीक है, words like forest, pasta, जो पुराने इंग्लिश के टर्म्स हैं, when they were coming into the French language, तो French people removed S to make it sound more French. So जहाँ जहाँ से S remove हुआ था, again I will not say from every word, from like जहाँ जहाँ से इन्होंने S remove किया, not everywhere they're adding this accent. बस इस accent का purpose यही है. एग्जाम्पल से तुम्हें समझ में आएगा. वेट, ओरिजिनली इन स्पेलिंग्स में S था, अब S नहीं है. फर्स्ट फॉरेस्ट मीन्स फॉरेस्ट. ओतेल के लाइक हॉस्टल, ओतेल. आइल,
Isle is your island. See? Then ठीक है, पास्ता जैसे मैंने बोला पेस्ट, पास्ता नहीं पेस्ट, पात जो भी. Then you can also write coat. I will be adding accent now. COAST. Hotel, this can also mean hotel or hostel. So इस accent की history ये है कि in 14 or around 15th century, a lot of English words were taken into the French language, and the French people made some changes to make those words sound like more French. तो ये सब जो words हैं, ये originally these comes from Latin. They just removed the S for it. होटल में ओ के ऊपर है, आइल में आई के ऊपर है, पाथ में ए के ऊपर, खोत में ओ के ऊपर. So this accent has no sound. This accent just have a history that they have removed the letter S. Wait. अब बहुत हमें हिस्ट्री पढ़नी पड़ी, जैसे हम जो अवर्ड आज है, we also add this on A. आज is age. So let's not get into the linguistic history. But जहाँ भी accents आएंगे, you can just slowly learn, keep in mind, okay, here it goes, there it goes. But again, this accent has no sound, so no harm. Last accent would be trema. Now, this accent is also you will find on very less number of words. This is not something which you will find very commonly. Lakso, trema. Trema, these are like two dots you find. And this is found on E, I, U, and O. Not on A. Trema is never found on A. जैसे इनके ऊपर 2 dots बने होते हैं, sometimes you must have seen like this. ओ आप समझ में आया, जब फोन पे भी तुम टाइप कर रहे होते हो तो वो अलग अलग ई और ओ के लिए एक्सेंट्स आते हैं. Yes, so that's all French. So this accent, ये accent तब आता है जब there are 2 vowels in a word. When there are 2 vowels in the word and both the vowels have their sound. So you can write this: when there are 2 vowels in the word and both vowels must be pronounced separately. Wait, just a minute. Separately. What's the spelling of separately? ऐसी सही तो है. Correct. Okay. Okay. Now, if I write the word, for example, this one, how will you pronounce this? अभी Pari, कोई accent नहीं है. pai, Accent नहीं है. May. We call it as may. एक्सेंट नहीं. me, May. May. ठीक है? This means but. May means but. Sounds like may. मतलब sounds like the month May. Wait. ये actually word है French में May. But when I will add an accent, अब दोनों इसमें accent आएगा I के ऊपर 2 dots. We know ना कि A के ऊपर तो आता ही नहीं है. So we are left with I. So now in this आई case, है. both the vowels have this sound. We know A का sound is A, मतलब A का sound is A, E. So my. So you were correct with the sound, but without accent may, with accent my, which means corn.
See, the accent changes the meaning. Even the sound. Mine. Even the word, this word. ठीक है, we can call it as nave, N-A-I, जो फ्रेंच का होता है properly, it should sound like nave. But इसमें भी I के ऊपर there is accent trema, which makes the sound naive. 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 Wait, and one more word, please write down. Now, इसमें भी the accent will come on E. Usually accent second वाले vowel पे आता है. ठीक है? E. Now, we know both the vowels have sound. So, no, N-O, no. इसे अलग अलग करेंगे ना, तो प्रॉपर साउंड चाहिए हमें. नो, नो, एल, नो एल, नो एल. और नो यूज एल ना मीन्स करें तो यूज ना करें तो इट्स अ पार्ट ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक. जैसे मात्रा नहीं लगाओगे तो मार्क्स कटते हैं स्पेलिंग नोल मिस्टेक. हम्म. नोल अच्छा, न्यूज ना करें, साउंड यू आर टॉकिंग अबाउट. ओके. नोल, या यस. नोल. वही, नो. बट नोल कोई वर्ड नहीं है फ्रेंच में, तो जस्ट वही. This also helps in the sound. Ki both the vowels have to be should be pronounced separately. Noel. Noel means Christmas. Naive. Mai. May. So this was all about accents. Not very tough, but I would say please learn the names at least, so that when I'm using it in the class, for example, मैं कुछ oral भी dictate कर रहा हूँ, I'm saying add accent aigu, add accent grave. So especially for accent aigu and accent grave, learn the directions. ऐसे नहीं कि Acute it and should be towards left, it should be towards right, क्योंकि उसी में confusion है. ट्रेमा, circumflex और सिदिल तो still you will remember कि अच्छा ये accents होते हैं. But ague and grave, learn. Ague is towards right, grave is towards left. I gave you a trick to also learn acute angle, so you can remember like that. yes. Wait, that is all. Okay. Situ, that's Yes. all for the accents. Okay. Wait, we can have a quick. I know the time हो गया, लेकिन but still I want you to do something. Wait. Just okay. So it's a small exercise. Let's try this out. Wait. So we did all these accents. Let's just read the examples as well. L'accent aigu, Aigu. aigu. For example, bébé. Bebe. Baby. It should see, अगर यहाँ पे accent नहीं लगाएंगे, it will sound like fee. But Fee. now we know एक e के ऊपर accent है, तो a का sound fe. 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 Not a. Fe. Fe means Fe. fairy. Fe means fairy. Bebe, fairy. Now next, try to pronounce this word Dhruv. Laksam graph वाला. Corsair. E का से क्या sound था? A. A. So sorcier. Sorcier. A.
Dhruv is not there? I'm He here. is there. Acha. बोलने Sorcière. Sorcière means witch. की And mère. Mère, mother. Then, as I told you, this accent has no sound. So, tête. Tête. Tête, c'est quoi? Head. Tête. Oui. Boîte. Boîte. Who- Boîte, box. Boîte. Répétez, Ritika, s'il vous plaît. Boîte. What? Tête. Tête. Sorcière. Sorcière. Mère. Mère. Now, garçon français, we already did. Now, this one. Air. H ka, there is no sound. Héroïne. Héroïne. So, O in, ro in, héroïne. Proper sounds. Now, इसी में exercise है. So, वाह, practice छोटी सी है. पता नहीं है अभी कि नहीं है. सही. Okay, this one. Question 3. Question 3. Can you all help me put accents? Par exemple, premier, sorcière. Sorcière. On the E. Which accent take the name and on Grave. which E? It's egu. 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 Nope. Egu accent after I. Accent grave. Grave on first E. Wait, not aigu. Grave. The sound is air. Sorcière. It's not sorcière. Air होगा तो grave होगा, aigu होगा. Grave का sound air. So sorcière. Okay. Second, boîte. Boîte. Now, boîte has accent. What's the name of this accent? Circumflex. Circumflex. Accent circumflex. Now, this word is not garçon, it's garçon. Which accent? Cédille. Then Cyril. Cédille, très bien. Français, Cyril. Accent Cyril. tête, Grave. On both the E's. juste accent circumflex. अगर both the e's में रितिका you said I think ना graph. So अगर graph आ जाता तो सोचो e का sound ए हो जाता. So tête. Okay. Right? Tête. It's tête. The sound of this word is tête. So sound से भी हम guess कर सकते हैं ग्राफ तो कहीं आ ही नहीं रहा है. ए का sound तो है ही नहीं. इनफैक्ट tête में ए में हम जरूर सोच सकते हैं यहाँ पे शायद एग्यू होगा क्योंकि ते का साउंड आ रहा है. बट इस वाले ई में तो कोई साउंड है ही नहीं. tête तो Tête. Oui. वही. Now Noël. Noël. Noël means Crema. trema. Christmas. Savadir it means Christmas. Christmas way. पे इसमें सिर्फ एक ही ई में है. दिस इज accent Second one. aigu. Second Aigu. नहीं Ayushi first E. Aigu. Oh, sorry. Then we have mère. Mère, ça veut dire quoi? Mère. Aigu. Aigu Aigu. है. Aigu. Grey. Grave. Grave. What is this accent? Grave accent. Wait, not aigu. Man. Mère. Mère. Ça veut dire quoi? When I ask ça veut dire quoi, I'm asking what is this? Ça veut dire quoi? What it means actually. So ça veut dire quoi? What accent? No, what does it mean? Samadhi? Ça veut dire Mare. She's asking about mare bird. Oh. I don't know what does it means. mother. Mère Mother. means Mother. mother. Pair. जो भी words हैं इधर, these are all basic day-to-day वाले words. Please learn the meanings. Maybe which you will not be using. Say Happy Mother's Day in French. रुक जा.
Mère June. June. Happy Joyous. Mother. Joyous. Joyous is the word for happy. Oh, joyous Mère and June. Happy Mother's Day, I think we call it as Fête de la Mère. So I know festival. Fête de la Mère is the word we use for festival of mothers. So Mother's Day, Joyous Mère. I have to think. मतलब I don't know. Happy Mother कैसे बोलेंगे? If I talk the name of the festival, Mother's Day as a name, so we call it as Fête de la Mère. Fête de la Mère means Festival of Mothers. That's how we call in French. Happy Mother's Day. Joyous Mère. It's okay. You can let us know on WhatsApp. Bien sûr. Bébé. अभी Fête de la Mère भी लिख लिया तो उसमें भी accents लिख लो. Accent circumflex, accent grave. Bébé. Bébé has both accent. Which accent? Ague. Very good. Ague. Heroine has, I में we have 2 dots. Trema. ouais, tréma. Très bien. Très bien. C'est fait? Are you Oui. writing or should I erase? Je peux effacer? Really fine. Oui? You can I- erase it. I guess I from my side it's done. D'accord. Why are you laughing? यदि मेरी तरफ से हो गया हटा दो। अरे नहीं, रितिका लिख रही हो तो वो बता देगी। नहीं नहीं Okay. Okay. अच्छा ठीक है. Now do this. Let's do this also. So here we have to do what? कि complete the given subject pronouns. We have done il, lu, je, tu, ये सब जो हमने किया था, right? Now अभी हम लोग के साथ क्या confusion आ सकती है? For example, I want to say my mother and I. अगर मुझे जैसे ये वाला sentence है, my sister and my mother are French. अगर मुझे ऐसे बोलना है. First of all, let's revise être verb. Who will tell me être verb conjugation? Je. Ritika, can you try? Yes. No? Oui? Je Comment? suis, Je suis. tu es, Tu es. elle est, Elle est. nous, nous sommes, Nous sommes. Nous sommes. vous êtes, Vous êtes. The Z sound? vous êtes, Oui. and E with, and ils sont, elles sont. Très bien. Très bien. In vous êtes, there is an accent, Oui, circumflex. accent circumflex, even on the être verb accent circumflex. ठीक है. Right. Now I want to say my mother and my sister are Indian. Simple sentence बनाना है. तो R, जहाँ पे भी R आ रहा है, it should be être verb. But still we get confused sometimes कि कौन सा वाला R आएगा. A लगाएंगे, est लगाएंगे, som लगाएंगे, et लगाएंगे. तो in that case, always try to replace my mother and my sister. ठीक है, ये है. Now you think कि तुम उनके लिए जो pronoun है, you will be using I? No. You will be using tu for them? You भी नहीं बोलेंगे. You will be using they, the feminine they. देखिए, both are Elles, feminine. So you will be elles saying sont. they are Indians. So इसलिए saw आएगा. So my sister and my mother saw from and Indian. Oui? Yes or no? For example, मैंने एक sentence दिया. Aman and are boys. ठीक है? कोई भी. So Aman and Ansh are. कैसे लिखूंगी मैं? Aman, A, Ansh, saw. इनके लिए which pronoun I have replaced it with? The plural form of they. Yes, plural form, which is THEY, they, ILS, ill. उसके साथ जो conjugation आती है, ill saw. Over here मैंने गलत लिखी है guys. नीचे इधर conjugation में it's ill saw, SONT.
So hence, ils sont. Ils sont garçons. Make sense? Now if I write Aman and me, for example, अब मैं क्या use करूंगी? This can be tricky. Aman and me are whatever the sentence goes, like let's say Aman and me are eating, Aman and me are watching, whatever, कुछ भी. But कैसे लिखेंगे Aman and me are? अब कौन से pronoun से I will replace? Anyone wants to tell me किस pronoun? हाँ? The V one, है we bien, are. très bien. So in this case, sont नहीं होगा. Aman et moi sommes. कि अमन एंड मी, अब मैं भी हूं, तो it will be we ना, कि we are girls, let's say we are girls. So Aman et moi sommes. We. And अगर दोनों फेमिनिन है, जैसे अभी था माई सिस्टर माई मदर, तो माई सिस्टर माई मदर में मैं नहीं हूं. सो डोंट थिंक कि इसके आगे ये भी माई सिस्टर माई मदर विल बी रिप्लेस बाय वी. नो, it will be replaced by they. And okay, this one, Aman and you are, ऐसे बोलना है मुझे कुछ. Aman and you are. Which? Dhruv, Ritika, you try. Which pronoun I will replace this with? किसकी conjugation के साथ लिखूंगी मैं? टू है. क्यों नहीं? देखो, त्यू कब होता है? त्यू और वो में दो डिफरेंस होते हैं. त्यू एंड वो. I know they both have same meaning, you, but there are two difference. One difference we know what that is, informal and formal. एक डिफरेंस और होता है, वो होता है सिंगुलर और प्लूरल का. let's assume कि मेरे सामने we all are friends. ठीक है, अब हमें पता है फ्रेंड्स के साथ आई कैन यूज द क्यू कॉन्जुगेशन. बट मेरे सामने तुम लोग प्लूरल में हो, अगर मुझे बोलना है गुड लाइक हाउ आर यू ऑल, फॉर एग्जाम्पल यू ऑल मुझे बोलना है, तो आई विल बी यूजिंग द वू फॉर्म. even though we are friends, I will be using you woo form. Why? Because it's plural. So there are two differences. You can write q for informal and singular. If I'm only talking to one person, तब मैं q use कर सकती हूँ, but I'm talking to more than one. Formal and plural. All right. So Aman, कहाँ थे हम? Okay. Aman and you. It will be replaced by woo. Because two people are there ना, plural हो गया ये. ठीक है, woo z, you will be writing not woo, you will be using the conjugation of woo. And let's say मेरे सामने वो दोस्त ही है, but still मैं, ठीक है, वे, ठीक है, that's it. ये थोड़ा सा confusion आती है हमें when we are making sentences. So this is what I want to clear. So my sister and my mother, you will be writing ELLESL. I, you know, je, you, tu or vous. My father and mother, again they. Which form of they? They. Masculine or feminine? Masculine. Masculine, yes. Even though we have mother, who is feminine, but when there are both the genders involved, we always choose the masculine form. So ILS is. My friend can be replaced by he or she. I'm बोलूंगी ना कि my friend is good, for example, is kind. So he is kind, she is kind. It's a single friend we are talking about. My friends will be they. We. So it depends. We are talking about feminine friend or masculine friend. So accordingly, but see, whatever the gender of the friend is, conjugation दोनों की same रहेगी ना. He is, she is, LALA. We. We.
C'est facile ou difficile? Easy Oui, or difficult? oui. Hmm. That's a question. C'est la question. Facile. Facile. Très bien. Merci. Okay, I don't think so that इसमें कुछ और है. All right. That's it for the day. 10 minutes early, I'll be leaving the class. Okay. Okay. Au revoir. Au revoir. Revise, and I forgot to send you sentences for the negative ones. So I will suggest make of your own easy sentences. अभी être और avoir से related ही बनाना. Don't make with other verbs. Other verbs as in कि I like, I don't like, ये सब अभी मत बनाना. Make with être and avoir. For example, I'm not, I have not. Only make negative sentences using être and avoir. Oui. Au revoir. And try to use जो हमने वो phrases लिखे थे ना avoir के to be वाले जो phrases थे. To be verb wale. For Be example, afraid. yes, I'm hot, I'm cold, I am tired, I'm afraid. Use Sleepy. those. Avoir में use those. At least make 10 sentences. Wait, 10? Wait. If you can make more than 10, good for you. Well and good. Yeah. Au revoir, c'est tout pour aujourd'hui. We will meet tomorrow, Adama. Adama.